Hello everyone, welcome to my YouTube channel Python Brains. Students, hope you all are well. Our today's topic is tuple functions. Many functions are there in tuples and most of the functions similar like list and strings. Okay, so one by one we discussed every function theoretically also and on ideally also. If you are new to my channel, please subscribe my channel for all upcoming videos. So students, before starting this video, you have the basic knowledge of tuples, how we can access the tuple, how we can slice the tuple. So before watching this video, you can cover the previous videos. You can check the description of this video and get all the links of the previous videos. To be used tuple function, or what is the use of functions? So there are some methods and functions which help us to perform different tasks in a tuple. These tuple functions make our work easy and efficient. Yes. So students, what is the use of tuple function or why we use that? So tuple function क्या होते हैं basically? अगर हमें कोई भी अपना टास्क परफॉर्म करना है सो ये हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं राइट एंड दैट मेक्स आवर वर्क इजी एंड एफिशिएंट देयर इज नो नीड टू राइट अ कोड ओके कोई जरूरत नहीं है कि हम राइट करें लेंथ निकालने के लिए कोड राइट करें या काउंट करने के लिए हम कोड राइट करें नो वी हैव अ बिल्ट इन फंक्शन वी डायरेक्टली यूज दैट फंक्शन एंड मेक आवर वर्क easy and efficient. So my first function is tuple function, student. We can use the tuple constructor or a function to create a tuple. It basically performs two things, students. Creating an empty tuple if we give no argument. Creating a tuple with elements if we pass the argument. What is the meaning of this, students, basically? So tuple function को हम क्यों use करते हैं, student? अगर हमें कोई भी एम्प्टी टपल बनाना है तो हम टपल फंक्शन का यूज करेंगे या हमारे पास कोई भी सेपरेट सीक्वेंस है यानी कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है एज अ आर्ग्यूमेंट मैंने स्ट्रिंग पास करी है या मैंने कोई लिस्ट पास करी है राइट तो उसका भी हम टपल बना सकते हैं वी कैन क्रिएट अ टपल विद एलिमेंट्स मीन्स यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आप दे सकते हो कोई स्ट्रिंग भी दे सकते हो लिस्ट भी आप पास कर सकते हो उसका भी हम टपल बना सकते हो. So this is the basic use of a tuple function. Let's see the example, student. I write tuple and here I am passing one string. So what is this? This string is converted into a tuple. Here I am passing what as an argument? Here I am passing one list as an argument. Okay. So this list converted into a tuple. Here I am passing a tuple. So it's already a tuple. So that is answer is same as the tuple. Okay. So this is the way, students, how we can use the tuple function. Let's check this tuple function on ideally, students. If I am writing like this, A is equal to tuple and normally this. Okay. So this create my empty tuple. Now you say, ma'am, how can I know this create an empty tuple? So you can check the type of A. Okay. So see, this is a tuple. Okay. Next, if I am passing one string in this, then also it converted into a tuple. If I am passing here a list, this also converted into a tuple. Okay. So this is the way, students, how we can use the tuple function. Okay, student. Now next we are having a next function, students. That is a len function. So this function returns the number of elements present in a tuple. It is necessary to provide a tuple to the len function. Okay. So if you just want to count, अगर आपको क्या करना है अगर आपको अपने tuple के elements को count करना है तो हम क्या करेंगे हम उसमें len function का use करेंगे. Okay. How we can use that on ideally? पहले अब हम
ये डिस्कस करते हैं। सी, अभी यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक मेरा टपल है, ओके, इन दैट I'll just write 4 to 5 element, whatever element you just want to give, you can enter, students. And simply I write len of A student, simply. Okay, so the length of my tuple A is 5. One more point is also there, student, that it is necessary to pass one tuple in the length function. If you are not passing anything, then it shows an error, student. Okay, so length function takes exactly one argument. Okay, students. This is the point, student. It is necessary to provide a tuple to the len function. If you are not passing, then it shows an error, student. Now we move to the next function, students, and that is a count function. So this function helps us to find the number of times an element is present in the tuple. We have to mention the element whose count we need to find inside the count function. Okay. So what is the meaning of this statement, student? अगर आपको किसी भी एलिमेंट का काउंट पता करना है कि वो कितने टाइम्स आपके टपल में रिपीट हो रहा है, सो फॉर दैट वी यूज द काउंट फंक्शन सिंपली. सी, दिस इज माय वन टपल और मुझे इसमें चेक करना है कि वन कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है. सो आई राइट टपल नेम डॉट काउंट एंड इन ब्रैकेट आई पास द वैल्यू. ओके, सो आई जस्ट वांट टू काउंट द वन अकरेंस. ओके, तो इसमें मैंने क्या पास किया, वन पास किया, सो माय आंसर इज 5 है. ओके, अब अगर इसमें आप कोई ऐसा एलिमेंट पास करते हो, स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन माय टपल, सो नो प्रॉब्लम इन दैट केस, देयर इज नो एरर, इट shows 0 in that case because that element is not present in my tuple. Okay, let's check this code on IDLE, students, for better understanding. Okay, so here I am declaring one tuple, students. Okay, so T1 is equal to, here I am passing one tuple. T1 is equal to 1, 2, 5, 8, whatever element you just want, you can give it there. Okay, so here, so I write T1 dot count, and in that I just pass 1 because I just want to count the occurrence of one student. So it is 5. If I am writing here T1 dot count, students, then suppose that I pass 65. Now 65 is not there in my tuple. So in that case, it is 0 students. Okay. Next, we are having, students, index function. Now, what is the working of index function? The tuple index method helps us to find the index or occurrence of any element in a tuple. This function basically performs two functions. One is giving the first occurrence of an element in the tuple, raising an exception if the element mentioned is not found in a tuple. Okay, now let's understand this thing, students. See, suppose that you are having one tuple. ठीक है, अब आपको क्या करना है, काउंट फंक्शन आपको काउंट करके बता रहा है, राइट, कि कितनी बार वो एलिमेंट जो है वो आपके टपल में है. ओके, बट इंडेक्स फंक्शन आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स दे रहा है, राइट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का. नाउ द क्वेश्चन इज दैट अगर सेम एलिमेंट आपके टपल में मल्टीपल टाइम्स है, सो द फर्स्ट अकरेंस, जो भी उसको वो वैल्यू जहां पर भी फर्स्ट टाइम उसको मिलेगी, वो उसका इंडेक्स आपको रिटर्न करेगा. ओके, so the simple thing is it return the index value of the first occurrence of the value. Okay, so see, this is my tuple. I write t1 dot index 3. So 3 का इंडेक्स क्या है, स्टूडेंट, 0, 1 and 2. so answer is 2. I just write t1 dot index 1. अब 1 यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी है 1, this position also, this position also, this position also, but this check only this one, the first occurrence. Okay, so t1 dot index 1 is 0. Now I'm writing t1 dot index 9. 9 is not there, so in that case it shows an error. Okay, again, now let's check this function on IDLE, students. Okay, so
This is my tuple, students. Okay. So normally what I write, T1 dot index of 7. Okay. Now index of 7 is what? 4. 0, 1, 2, 3, 4. I write T1 dot index 1. अब 1 मेरे tuple में multiple times है. So this will check the first occurrence of 1. And if I am writing T1 dot index any number that is not present in my tuple, in that case, it shows value error. That means this is not present in my tuple. Okay. So this is the way, students, how the index function works. Next, sorted function, students. Now, sorted function is what? As the name is there, same the work is there. So, this method takes a tuple as an input, as an argument, and returns a sorted list as an output. This is a very important thing. ओके, ये आर्ग्यूमेंट आपसे लेगा बट रिटर्न क्या करेगा? लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न कर रहा है. ओके, इट डज नॉट मेक एनी चेंजेस टू द ओरिजिनल टपल. ओके, ओरिजिनल टपल आपका एज इट इज रहेगा. ओरिजिनल टपल में कोई चेंज नहीं है, बट वट एवर योर एलिमेंट्स आर देयर, दैट इज सॉर्टेड इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, स्टूडेंट. ओके, this is again a very simple function. Now let's check this function on IDLE, students. Okay, so T1 is there. I am having, okay, I write L1 is equal to sorted T1. मुझे T1 को sort करना है. Okay. So now when I print L1, student, so it is sorted but in the form of list. अगर अब आपको अपना टपल चेक करना है तो आप T1 लिखो. आपका प्रीवियस टपल एज इट इज है, आपका ओरिजिनल टपल एज इट इज है. देयर इज नो चेंज इन योर ओरिजिनल टपल. सेम वे, अगर आपको ये बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया. अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, स्टूडेंट्स, सो simply you can pass your tuple here and you write reverse is equal to true. Okay, so अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा. नाउ चेक L1, स्टूडेंट्स. In that case also your tuple is same. Your original tuple is same. No changes in your original tuple. Okay, students. So this is the way how your sorted functions work. Okay. Next, student, I am having min, max, and sum function. Okay. All three functions are quite similar. Okay. So minimum function gives the smallest value in the tuple. Okay. Maximum function gives the largest value in the tuple. And sum function gives the sum of all the element present in the tuple. Very simple. Okay. मिनिमम फंक्शन क्या करता है? वो आपको मिनिमम वैल्यू देता है टपल से. मैक्सिमम फंक्शन आपको लार्जेस्ट वैल्यू देता है टपल से. एंड सम फंक्शन क्या करता है? वो सारी वैल्यूज को ऐड करके आपको सम प्रोवाइड करता है. ओके, लेट्स चेक द एग्जांपल ऑन IDLE, स्टूडेंट्स. So I am having this tuple. So we apply the concept on this, students. So simply I write minimum of T1. It is 1. If I am writing maximum of T1, so this is 15. Okay. And if I am writing sum of T1, students, then it is 61. So see, this is my tuple T1, students. If I am writing minimum of T1, so minimum element is 1. Okay. No matter whatever it is, means वो कितनी बार आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay. Minimum element is 1, that is 1. Maximum of T1, maximum means 15 we are having. So maximum of T1 is 15. Because 15 element मेरे टपल में सबसे बड़ा एलिमेंट है, लार्जेस्ट एलिमेंट है, राइट. सम ऑफ T1, आप इन सब वैल्यूज को ऐड करके देखिए. द सम इज 61. So this is the way how all these three functions, min, max, and sum, works. Next we are having, students, del statement. अब मैंने यहाँ पर del statement लिखा, फंक्शन नहीं, बिकॉज del मेरा एक स्टेटमेंट है, फंक्शन नहीं है, राइट.
So del statement is used to delete the entire tuple. Due to the immutable nature of the tuple, we cannot delete one element of the tuple. Okay? So del statement से आप क्या कर सकते हो students? Del statement से आप पूरा tuple तो delete कर सकते हो. बट इफ यू वांट कि उसमें से आप एक एलिमेंट को डिलीट कर दो, जैसे हम लिस्ट में कर सकते हैं, वो हम इसमें नहीं कर सकते हैं बिकॉज टपल्स आर इम्यूटेबल. ओके, so let's check the example students on ideally for better understanding. This is my tuple T1. Okay. So now I just want to access one element of the tuple T1 3. Okay. So T1 3 is what? 8. 8 is the third element of my tuple according to the position. वैसे तो fourth है. Okay. But if I am writing T1 3, so 8 is there because वो 0 से start हो रहा है. Okay. अब मैं अगर इसको delete करना चाहती हूँ, so that is not possible. Single element में delete नहीं कर सकती हूँ. Right? But if I am writing del T1, okay. So अब ये वाली स्टेटमेंट मेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई. ओके, अब पता कैसे चलेगा? आप T1 को प्रिंट करके देखिए, है ही नहीं. T1 is not defined, right? So T1 is not there. So this is the way how the del statements work, student, this is all about our today's session. What we learn in this session, we learn about the different functions of a tuple, students. I hope all the concepts are clear to you now. If you have any doubt, you can write it in the comment section or you can mail us also, students, on our particular mail ID. If you like my video, please press the like button, students, and don't forget to subscribe my channel for all the upcoming updates and videos. Till then, keep watching, keep studying.